not here. Can we share a PDF here? Yes, you Yes, can. sir. You can share the screen also. Ghanshyam sir, can you give the access? Yeah. Yeah. So hello everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So today we discuss about costing, cost audit, and cost control and cost reduction. Right? Okay. So let me introduce myself first. ये मेरा एक छोटा सा प्रोफाइल है. I am a practicing chartered accountant and I am a cost accountant also. I secured All India rank 14 in CMA final, and I am also done diploma in content audit of bank. I am the executive member of management committee of Bikaner Jhunjhunu chapter ICMA. I am a member of GST cell of NIRC. I am faculty of direct tax and cost audit at ICMA Jaipur chapter and NIRC as well. I am taking sessions for IOTP and placement at Jaipur chapter and NIRC. I am associated with Nemani classes, Grooming Genix, Biani College, and director of Once Smart Classes, coachingleader.com, and partner at ABS Agarwal and Associates. So this is my small short profile. So सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे कॉस्टिंग. ठीक है, आप सब में कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया हुआ है. आप सब किसी न किसी तरीके से प्रोफेशनल हैं. किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया होगा, किसी ने कॉस्ट अकाउंटेंसी किया होगा, कोई एमबीए होगा. राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए पैसे के अलावा क्या चीज जरूरी है? एनीवन? क्या कोई बता सकता है बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल के अलावा क्या जरूरी है? एग्जीक्यूशन. ओके. सर प्लानिंग. प्लानिंग. राइट. एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, दो पॉइंट आए अभी तक हमारे पास. एनीथिंग एल्स? मटेरियल. ओके. मेन पावर. ओके. So we need many resources, right? But yes, planning and execution is most appropriate answer in this situation. But can we plan without any knowledge? Can we plan without knowledge? No. Planning ऐसा possible ही नहीं है, right? आप पूरी दुनिया में देखिए, आप किसी से भी अगर बात करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे लगता है फाइनेंस है. लोग फाइनेंस को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? कि प्रॉफिट बढ़ाइए. सब आदमी को क्या चाहिए? प्रॉफिट. इंक्रीज द प्रॉफिट, राइट? बट कॉस्टिंग के बारे में लोग इतनी बातें नहीं करते. क्यों नहीं करते बताइए, क्या लगता है आपको? कॉस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता? लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस. लैक ऑफ. वेरी गुड, वेरी गुड. यस. देखिए क्या है, बहुत से लोगों ने सुना हुआ रहता है, ये सुना हुआ है कि हाँ प्रॉफिट बढ़ाना है. प्रॉफिट प्रॉफिट वर्ड इतना हमारे अंदर जा चुका है कि बाकी चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते. बट जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्रॉफिट के भी तो दूसरा पहलू है, वो है कॉस्ट. अगर हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो यस, वी कैन इंक्रीज द प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. एम आई राइट? यस. Okay.
सो कैसे कर सकते हैं हम कॉस्ट को कम, और इसको कैसे अपनाया जाए या इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसकी हम बात कर रहे हैं आज, राइट। देखिए, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्टिंग, ये सब चीजें सिमिलर है, ठीक है, सब चीजें लिंक्ड है आपस में। तो सबसे पहले मैं आपसे अगर ये पूछूं व्हाट इज कॉस्ट, कोई बता सकता है व्हाट इज कॉस्ट? The resources utilized for making a product. The price paid for that. द So, प्राइस sir, पेड the फॉर दैट। monetary value for any product, goods or service. ओके, can we say monetary value of all the resources consumed to produce a product? Yes, sir. Yes. Yes, right. So how we would recognize, sorry, amount incurred for producing a goods or rendering a service? Yeah, right, Satish Kumar, right. So how will you verify that the cost calculated by you is perfect or not? If you calculated cost for some object, then how can you verify that that cost is absolutely correct? By ensuring the targeted profit is achieved or not. Is the achievement of targeted profit is enough to ensure that the cost calculation of cost is perfect? Sir, we can look competitors' products also, whether they are manageable, whether they are competing with our product or not, price of it. And Right, sir, it right. also depends upon the market reaction. Okay. So देखिए क्या है, जब गवर्नमेंट ने, आप एक चीज समझिए, क्या आप ये मानते हैं कि हम जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें गलती हो सकती है हमसे? Yes, sir. यस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें हमारी गलती नजर नहीं आती, ऐसा भी होता है। Yes, sir. Yes. So that's why we have to appoint someone other which can independently examine our process or our calculation. That is audit. That is called auditor, right? Yes. क्या आप, Yes. oh. So do you hear about cost audit? Yes, sir. Okay, what is cost audit? The audit of cost reports is known as cost audit. Okay. Anyone else? What is cost audit? The verification of all the accounts, like so that all the principles of costing are met. So Yeah, right. examination. And Satish Kumar is also right. Right. So why there is a need of cost audit? Are we incapable of managing cost? To check the accuracy, authenticity of company's cost plan. Yes, exactly. See, no one is perfect in anything, right? So there is always a possibility of any lacunas or any mistake. So there are three courses designed for making them perfect: CA, CS, CMA, right? Yes, sir. Yeah. So CA is expert for finance and CMA is expert for cost and CS is expert for compliance. And we believe if any cost records are examined by a CMA, so we can ensure that they are error free. Am I right? Yes. Yes, sir. That's why that is the power of our signature. You should proud of it. Right? रिसेंटली अभी एक फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, निर्मला सीतारमन जी, सुना आपने उनको? Yes, sir. उन्होंने क्या कहा कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में?
उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले कर सकते हैं वो है सीएमए, राइट। तो उसी सीएमए की हम बात कर रहे हैं आप आज, तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए तीनों चीजें लिंक्ड है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस अज्यूम कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए, राइट। अब हम आपके कॉस्ट रिकॉर्ड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन बी बायस्ड। So we have to appoint an independent person who have vast knowledge of cost accounting principles, cost accounting rules, and cost reporting frameworks, which is called CMA. So we can examine your cost records, cost statements, cost books by that independent person and can get the opinion of that person on true and fair view of cost of production, right? Yes, sir. क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लिखा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है ये कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन से जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करवाएंगे तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती है या नहीं। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है? सर बिकॉज बायसनेस इसी में आती है, मीन्स डिस्क्रिपेंसी जहाँ पे जो फ्रॉड अपन कर सकते कंपनी वो मेन इस पे कर सकते। और बोलिए। अच्छा, आपने फाइनेंस ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी है किसी ने? ये वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। फाइनेंस ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी है किसी ने? एनीवन? Anyone The have read the evaluation of definition? financial statements. Yes. Let me read for you. Financial audit is an independent examination of financial statement of an entity to express an opinion on true and fair view of such financial statement. Right? वहां पे हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे कमेंट करवा सके। जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम कॉस्ट बुक को एग्जामिन करवा रहे हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कमेंट करवा सकें। सो व्हाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्ड क्यों यूज किया गया? एक आंसर आपने दे दिया है, उसके अलावा कोई आंसर है तो बोलिए। सर कॉस्ट रिकॉर्ड सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, This can be a वेरी गुड, reason. नियर बाई है आप। सर चलिए मैं ओवरऑल कॉस्ट रिकॉर्ड्स में और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। अभी अगर ट्रू और फेयर वैल्यू जानी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फोकस करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। देखिए मुझे एक बात बताइए, मेरी एक कंपनी है, ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ, मैंने कंटेंट इसमें बहुत कम डाला है सीट में, सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने रखे, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट आई हैव ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी and I produce 4 products called A, B, C, D, right? So how many cost sheet I will prepare? So 4. 4. Anyone else? Sir, if we need to means independently identify, then we can Yes, say these are separately identifiable products. So how many cost sheet I will prepare? 4, right? And how many profit and loss account and balance sheet I will prepare? 1. 1, right? Wow. Am I right? So I have 1 profit and loss account and balance sheet and 4 cost sheets. So I have 4 cost of productions. फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो एज ए होल पूरी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी कंपनी के बनते भी एक ही हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं। जबकि कॉस्ट ऑडिट जो होती है दैट इज प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज ऑडिट। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम अगर 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो चारों की कॉस्ट ऑडिट हो। डू यू अवेयर अबाउट इट? Sir, can you repeat once? अगर मैं 4 प्रोडक्ट बना रहा हूं तो चारों की कॉस्ट ऑडिट हो, इज इट नेसेसरी?
No, it is नहीं not sir. necessary. It depends on the No, method. sir. नहीं sir. Yeah, right. That's why I use the word cost of production, because maybe I'm getting the cost of production audited for one product only. अगर मैंने यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स लिखा होता तो फिर वो चारों प्रोडक्ट को डिनोट करता। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए डेफिनेशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा गया है। आपने पढ़ा होगा रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, राइट? Yes. Yes So sir. maybe I am liable for cost audit for only regulated sector. In that case, I will prepare cost reports for both the sectors, regulated and non-regulated. But cost audit is only applicable to regulated sector in my case. So that's why हमने यहाँ पे cost of production word यूज किया है, जिसकी audit होनी है उसका cost of production. You get my point? Yes. Yes, sir. Okay. Now थोड़ा सा अपन cost audit करता कौन है? क्योंकि कुछ लोग मुझे लगता है नॉन सीएमए भी है यहाँ पे। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? A practicing cost accountant. Practicing. Very good. Practicing cost accountant. Can a chartered accountant can be do audit, cost audit? Is there, No sir. No, sir. yes, is, Yes. if available, then a chartered accountant can do. No. Actually, No, sir. this is the provision in this in Companies Act 1956. Companies Act 1956 prescribed that cost audit is done by a CMA, but if no CMA is available, then cost audit can be done by a CA. That provision was in Companies Act 1956. But after commencement of Companies Act 2013, this clause has been removed. And now Section 148 of Companies Act 2013 says that cost audit can be done by only SCMA in practice. Right? That's why the scope of CMA is boosted up after the commencement of Companies Act 2013. Right? Yes sir. Here the answer of the question that when someone asks you that how why the scope of CMA is boosted up in now these days. Okay? चलिए, तो ये बात हुई हमारी कॉस्ट ऑडिट कौन करता है। तब ये बात हुई कौन करता है, तो फिर ये भी बात होनी चाहिए कि सीएमए कौन सा इंस्टीट्यूट करवाता है, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो उसका थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1944 में ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड हुआ था एज ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अर्लियर इट्स नेम CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, which is now become cost and management accountant. Right? In 1959, it is incorporated as a statutory corporation, naming Institute of Cost and Works Accountants of India. And in 2012, it is renamed as Institute of Cost Accountants of India. Okay? तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, तो कैन वी यूज ICAI इन शॉर्ट? No sir. No, sir. व्हाई? सर अभी रिसेंटली Audit आया है हाई कोर्ट का ऑर्डर कि आप नहीं यूज कर सकते हैं ICAI. Yeah, very good. It's just for checking that you are updated or not. रिसेंटली कोर्ट ऑर्डर आया है कि आप शॉर्ट में ICAI नहीं ले सकते बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट करता है CA इंस्टीट्यूट के साथ। यस, करेक्ट। सो नाउ फर्स्ट टाइम, कैन यू टेल मी फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड? इन विच ईयर कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड ऑन कंपनीज? 1965। 1965 में फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस की गई थी और सीमेंट इंडस्ट्री पे इंट्रोड्यूस की गई। ये आपके कुछ कोर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए।
सीमेंट इंडस्ट्री पे इंट्रोड्यूस की गई थी 1965 में। ठीक है, तो क्या उससे पहले कॉस्ट ऑडिट नहीं होती थी? बताइए, क्या उससे पहले कॉस्ट ऑडिट नहीं होती थी? सर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। यस, देखिए कॉस्ट ऑडिट उससे पहले भी होती थी, बट एट दैट टाइम इट इज फॉर गवर्नमेंट, इट इज फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स नॉट फॉर कंपनी। यस, उससे पहले भी होती थी, यस डेफिनेटली होती थी। कैन एनीवन टेल मी हाउ कॉस्ट ऑडिट इज ओरिजिनेटेड? आई कहां से कॉस्ट ऑडिट? हाउ कॉस्ट ऑडिट इज ओरिजिनेटेड? सर डालमिया परिवार था जिसमें ये हो रहा था, कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है, बट उसके कारण ही ये इंट्रोड्यूस हुआ। नहीं, उससे भी पहले की बात कर रहे हैं। सर आई थिंक दत्ता कमीशन ने स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पावर दी थी। नहीं, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आया ही कहां से, वर्ड ही कहां से आ गया कॉस्ट ऑडिट? व्हाई देयर द नीड ऑफ कॉस्ट ऑडिट? कंपनीज में आया, कंपनीज के लिए तो जो बिरला कमेटी बनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वहां से इसकी शुरुआत हुई। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है जब गवर्नमेंट काम करवाती है कोई भी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवाती है। यस यस। तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे हैं, आपने कॉस्ट पढ़ा है तो आप तो अच्छे से अवेयर हैं। वन इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यस तो गवर्नमेंट जब पहले काम करवाती थी ना, तो गवर्नमेंट कराती थी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैंने आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दिया है एंड एट द एंड ऑफ द वर्क आप मेरे पास लेके आते हैं कि सर मेरी 4 करोड़ की कॉस्टिंग है, इस पे मार्कअप जोड़ के आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, तो क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि ये 4 करोड़ की कॉस्टिंग प्रॉपर है या नहीं है? यस यस। यस, तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। वहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे पेमेंट कर दे हम, ये तो वेरीफाई करवाना जरूरी है। तो वहां से गवर्नमेंट ने कॉस्ट को वेरीफाई करवाना शुरू किया। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये बाकी जो भी कमीशन वगैरह ये सब बाद में आए हैं, जब कंपनीज पे एप्लीकेबल होना था तब की बात है, राइट? यस चलिए, अभी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ मिलेंगे हमको? कहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन? सर कंपनीज एक्ट सेक्शन 148 140। 148। या वेरी गुड। सो देखिए, यस यस, देखिए the provision of auditing is defined under the Companies Act as 139 to 147 in financial for financial audit. Am I right? 139 to 147 for financial audit, 148 for cost audit, and 204 is for secretarial audit. Secretary. Yes sir. Right? Okay. Yes sir. So 148, section 148 prescribe that central government has power to make any rule in this regard, and central government has made the rules called Companies Cost Records and Audit Rules 2014. Did you hear about that? CRA Rules 2014 in short. Yes sir. Yes. Yes. How many rules are there? Very good, Jatin. Very good. Yes, there are only 6 rules. So we have summarized such rules for you here. Kamal, very good. Right. These are the rules. Rule 1. Rule 1 is for commencement title when the these rules are comes into the effect, that is 30th June 2014. Rule 2 is for definition, but we have to concentrate on rule 3, which is the most important. रूल 3 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, पर उससे भी पहले हमें कुछ चीज पे और ध्यान देना है। यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया में सेक्टर्स चलते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है: रेगुलेटेड सेक्टर्स,
non-regulated sector and other sectors. Can anyone tell me what is the meaning of regulated sectors? What is the meaning of regulated sectors? Defined in table A. Okay. Or anything else? I'm asking for the meaning of regulated sector, not the name of regulated sectors. So the sector which are governed by government. Yeah, very good. Which are governed by government or any other government regulatories, which are regulated by the government. We can say that. So there are 6 sectors. One is petroleum products. Second is telecommunication. Third one is electricity. Fourth one is drugs and pharmaceuticals, fertilizer, sugar and industrial alcohol. CG can direct. Yeah, CG can direct add or delete any sector as a regulated sector, right? But at present, there are 6 sectors prescribed under regulated sectors. Okay. Okay. सर तो डिफेंस को नॉन रेगुलेटेड में क्यों रखा गया? Because the price of defense is not regulated by the government. That are not these are not the sellable commodities, sellable commodity in open market. Okay. So regulated sectors are only right now there are only 6 regulated sectors. Regulated sector are those sectors which are open for public, but price of that sector, supply and demand of that sectors are regulated by government, right? And 33 sectors are covered under table B, which is non-regulated sector. Is it possible that I am making some regulated sector product or some non-regulated sector product together? Is it possible? Yes. हो सकता है ऐसा कि मैं एक regulated sector product बना रहा हूँ, एक non-regulated भी बना रहा हूँ, other भी बना रहा हूँ, चलो तीनों बना रहा हूँ. Is it possible? Yes, sir. तो अगर मैं तीनों प्रोडक्ट बना रहा हूं और तीनों का मेरा अलग अलग टर्नओवर है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी समझ में आएगी. तीनों का मेरा अलग अलग टर्नओवर है, तो व्हाट शुड बी माय ओवरऑल टर्नओवर? No. 100 crore is the limit. I am asking that if I am manufacturing one product from table A, one from table B, and one from table C, which is other sector, then what is my overall turnover? What will be my overall turnover? Sir, 50 crore. सर सबका मिला के होगा. Yeah, सर सबका मिला के aggregate annual turnover will be there. Yeah, right. आप लिमिट पे चले गए बेटा. लिमिट I'm not asking about auditing limit. I'm asking you how we calculate overall turnover. We will by adding all. Sir, aggregate. Aggregate turnover of table A, B, and C, right? Yeah. Aggregate. That is called overall turnover. And what is individual turnover? What will be the individual turnover? Sir, individually that is calculated for each. Okay. But individual turnover of each sector. Yeah, right. But at the time of checking applicability of cost audit, at the point of individual turnover, we have to take table A and table B turnover together. It is defined under FAQs issued by the ICA. It means if I am asking you about overall turnover, you will add all the turnover from table A, B, and C. But if I will ask you about individual turnover, then you will add on A and B. Is that clear? Okay, sir. That means excluding other sectors. Yeah, excluding other sectors. मैं फिर repeat कर दूं एक बार.
कि जब आपको ओवरऑल टर्नओवर पूछा जाएगा आप ए बी सी तीनों को इंक्लूड करेंगे, बट जब हम कहेंगे इंडिविजुअल टर्नओवर तब आप ए और बी को इंक्लूड करेंगे। और ये एफएक्यूज जो होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पे इंस्टीट्यूट ने इसका रिप्लाई किया हुआ है। ओके, एक सेकेंड, मीटिंग में होस्ट कौन है? घनश्याम सर, आर यू देयर? हाँ जी, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, सेम मीटिंग में एक बार आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं सब जन, ठीक है? या ओके हाँ।